ओके, प्रैक्टिस करते हैं। देखिए यहाँ पे जो CSWA प्रॉब्लम और यहाँ पे 5.7 है। ठीक है, इसको देखेंगे। यहाँ पे देखिए इसकी जो लेंथ है टोटल यहाँ पे 80 है, एंड देन जो डायमीटर है ये डायमीटर यहाँ पे 8 डायमीटर यहाँ पे इसका गिवन है। ठीक, इसको बनाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से 8 डायमीटर एंड देन लेंथ 80 mm, ऑल द डायमेंशन आर इन mm। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो यूज करना है हेल्प रेफरेंस प्लेन एंड एक्सट्रूडेड बॉस बेस एंड देन फिलेट सर्कल। सॉलिडवर्क्स की बनाते हैं यहाँ पे स्केच, एंड मैं ऐसे देता हूँ फ्रंट प्लेन इसके लिए, एंड देन फीचर्स एंड स्केच, और ड्रॉ करते हैं इसमें 8 डायमीटर। ओके, देन एग्जिट फ्रॉम स्केच, नाउ फीचर एक्सट्रूडेड बॉस बेस, then reverse the direction and give the boss base length which is 80 mm. Okay, now choose the white way. Then see this drawing again. Now this face is 12 diameter and having the thickness 3. Again select this face, right click and then sketch. Now take circle and draw the circle from the center. Right click and take a smart dimension, specify the dimension which is 12 diameter. Okay, next, then again exit, right click and then exit from sketch, feature extruded boss base. Okay, and provide the boss base which is 3, thickness which is 3. Okay, and then so here it is, ये पोर्शन यहाँ पे, ये पोर्शन एंड देन ये पोर्शन बन गया यहाँ पे। अभी ये जो कट है इस कट को लगाएंगे यहाँ पे, एंड देन कट की जो लेंथ है देखिए टोटल 80 माइनस, एंड देन यहाँ पे कट नहीं है तो 80 माइनस 30। ओके, ये कट सेक्शन है हमें यहाँ पे, एंड इस पोर्शन को यहाँ पे कट सेक्शन ड्रॉ करते हैं इसमें। तो सिंपल मैं सॉलिडवर्क्स की पर आता हूँ यहाँ पे, एंड select this face, right click and then sketch. Okay, now convert the entities, select the circle and convert the entities. Okay, now take center line from the sketch and draw the quadrant. Okay, then again take line and draw the line. Right click on the line and add the relation vertical. Now same here, add the relation horizontal. Take a smart dimension, specify the distance which is 3. Okay, this is 3, and same here. This distance is also, yeah, देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस गिवन है 3, ठीक है, ये 3 है यहाँ पे। नेक्स्ट अगेन, ओके, sketch and choose the mirror entities. Now entities to mirror, select these both line, horizontal vertical about the mirror, तो and then select this, और इस लाइन के about मुझे mirror चाहिए यहाँ पे, and then okay, now again and mirror the entities to mirror, मुझे यहाँ पे ये entity and then same ये entities यहाँ पे mirror करनी है, about the mirror same इस लाइन के about में mirror करना है। नेक्स्ट, आई होप कि क्लियर हुआ इतना आपको। then right click and exit from sketch. Okay, then feature extruded cut, and extruded cut select the portion, this is same this portion and this portion. Okay, डायरेक्शन देखिए यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, बट चेंज रिवर्स द डायरेक्शन। नाउ देन तो डिस्टेंस मुझे देना है यहाँ पे, वो टोटल जो डिस्टेंस गिवन है देखिए 80 माइनस 30। सिंपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 80 माइनस 30 which is 67। नाउ ठीक है, ये जो कट है मुझे वो यहाँ मिल गया। देन अगेन देखिए यहाँ पे ये कट जो है, इस कट को मुझे यहाँ लगाना है, इसकी लेंथ यहाँ पे 11 है, एंड देन इसकी जो डेप्थ है सेम 3 ही मुझे यहाँ पे देनी है। देन अगेन नेक्स्ट, okay, right click on the face and then sketch. Now again convert these entities. Okay, convert the entities, convert the circle into entities. Now okay, take line
and draw a line from this point to this point. Again, right click on it at the relation vertical. Okay. And select this and specify the length of this line, which is 3. Yeah. Right click and then exit from sketch and feature extruded cut and then extruded cut. Extruded cut, select this face. Okay. Not the all, only this face, and then selected contour and delete it. Now select this face. Okay. ये देखिए यहाँ पे स्पेस ये कट हो रहा है, बट यहाँ पे मुझे लेंथ देनी है इसकी एट लाइन, जो लेंथ है वो 11. नाउ ठीक है, या सिंपल, तो ये बन गया यहाँ पे. ठीक है, select this face and then sketch. Now देखिए यहाँ पे जो सर्कल है वो 3 डायमीटर का सर्कल है एंड देन 4 डीप तक हमें डेप्थ तक इसको कट करना है. देन यहाँ से जो डिस्टेंस है जिससे उसका 5 है, एंड टेक सर्कल एंड ड्रॉ द सर्कल here and right click, take smart dimension, specify the dimension which is 3 diameter. Okay, 3 diameter. Next again, take smart dimension and specify the distance which is 5. Next, select the center point of the circle and the center at the relation which is horizontal. Now the sketch is fully defined. Right click and then exit from sketch and extruded cut and cut up to depth 4. Okay, specify the depth 4. Now here it is. So I hope कि clear हुआ हो ये. Now last part to check the mass properties and volume of this object 3494. Okay, and again to check the volume of this, evaluate and then mass properties. So here 3493 9.5 which is equivalent to 3494. I hope कि clear हुआ हो ये आपको. इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सॉलिडवर्क्स सीरीज को फॉलो करें. थैंक यू.